Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, today we will explore the facts about the entitled theme, Educational Implications of Vygotsky's Socio-Cultural Cognitive Development Theory. As we have already discussed, conceptual framework of social constructivism, principles of Vygotsky's socio-cultural cognitive development theory. Now, in today's lecture, we will focus on various educational implications of Vygotsky's cognitive development theory. Dear students, as we know that educational implications simply describes how we will use the theory in the field of education in order to make the education better and effective. Now, if we will look through the prism of teaching learning process, किस तरीके से constructivism with special reference to social constructivism or Vygotsky's theory of cognitive development helps us to make the teaching learning process effective and goal oriented. There are the various educational implications of Vygotsky's social constructivism. The major educational implications are highlighted as under. Number 1. Learning is child-centered. According to Vygotsky's cognitive development theory, learning should be child-centered. It means as per the needs and requirements of the child. The child's potential level must be taken under consideration while performing the task. Dear students, according to social constructivism, learning should be child-centered rather than the subject-centered or teacher-centered. अगर हम डिफरेंशियल साइकोलॉजी के एंगल से देखेंगे, डिफरेंशियल साइकोलॉजी believes that individuals are different in terms of cognitive competencies, in terms of capacities and capabilities, in terms of wills and wishes, interests and motives. Now, same is the case as per the Vygotsky's social constructivism is concerned. Social constructivism believes that every child should be given the task as per the potential. कि Vygotsky ने अपनी थ्योरी में डिस्क्राइब किया है, अगर कोई टास्क हम बच्चे को देंगे और वो टास्क बच्चे के पोटेंशियल लेवल से बाहर है तो बच्चा उस टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे में कैपेसिटी है लोड उठाने की 10 kg से लेके 20 kg और उसी बच्चे को हम 100 kg देंगे तो वो बच्चा 100 kg वेट को नहीं उठा पाएगा. So here we have to always keep it in the mind. The learning should be as per the capacities, as per the abilities, by and large potentials of the child. हम बच्चे के पोटेंशियल के बाहर नहीं सोच सकते हैं. Dear students, प्राइमरी बच्चों को जो स्टूडेंट्स प्राइमरी क्लास में पढ़ते हैं उन बच्चों को अगर हमें मैथमेटिक्स सिखाना है तो हमें मैथमेटिक्स के बेसिक रूल्स सिखाने हैं. बेसिक या सिंपल मैथमेटिक्स उन्हें सिखाना है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड. हम उन्हें अलजेब्रा नहीं सिखा सकते हैं, हम उन्हें पूरी ज्योमेट्री नहीं सिखा सकते हैं. अलजेब्रा कैन नॉट बी performed by the kindergarten students, by the primary class students. यानी कि हर वक्त हमें एक वो टास्क बच्चे को देनी है जो उसके पोटेंशियल जोन में फॉल होती है. जो बच्चे के पोटेंशियल जोन से बाहर टास्क है उस टास्क को हम बच्चों को नहीं दे सकते हैं.
यहाँ पर अब मैथमेटिक्स की बात नहीं है, चाहे लैंग्वेज का डिस्कोर्स है, चाहे सोशल साइंस डिस्कोर्स है, या साइंटिफिक नॉलेज हमें बच्चों को देनी है। प्राइमरी स्टूडेंट को हम साइंस के बेसिक्स सिखा सकते हैं, हम कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस के प्राइमरी स्टूडेंट्स को नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि वो उन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। दैट इज वाई देयर शुड बी द प्रोविजन ऑफ लर्निंग एज पर द चाइल्ड्स इंटरेस्ट्स, एज पर द चाइल्ड्स कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज। इसीलिए फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, these are those countries which highly recommend the child centered learning, यानी कि जो उनका किंडरगार्टन सिस्टम है, किंडरगार्टन सिस्टम से लेके हायर एजुकेशन सिस्टम तक, they strictly follow the child centered learning approach, especially in the country of Finland। वहाँ पर बच्चे के कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज के हिसाब से कैरिकुलम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, और बच्चे के हिसाब से हर एक टास्क वहाँ पर बच्चे को दी जाती है। किस टास्क में बच्चा इंटरेस्ट रखता है, किस टास्क को बच्चा कर पाएगा, उसी के हिसाब से उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया है। नाउ इन नटशेल में हम कह सकते हैं learning should be child centered. It means as per the needs and requirements, as per the capacities and capabilities of the child. Number 2, learners are active. Learners play an active role instead of a passive one. It means learning is the active phenomena in which learners actively explore physical and social environment in order to create and develop knowledge. Dear students, जैसे कि हम सब जानते हैं, constructivism believes knowledge is created and developed with the result of experience. The individual makes the active participation, and due to the active participation, the individual explores both physical and social environment. Knowledge cannot be created without the active participation. जहाँ तक कि कॉन्स्ट्रक्टिविज्म एज ए डिस्कोर्स ऑफ थॉट का सवाल है, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म एज ए डिस्कोर्स ऑफ नॉलेज, इट प्योरली बिलीव्स दैट लर्निंग इज द एक्टिव फिनोमिना, देयर मस्ट बी द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लर्नर। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ 2005 which lays emphasis on curriculum should be designed on the basis of constructivistic approach। तो उसमें बहुत से मेंबर्स थे, एक उर्दू का एक्सपर्ट भी था, his name was तनवीर हबीब। तनवीर हबीब was one of the Urdu experts। उससे पूछा गया कि आप constructivism से क्या समझ सकते हो, and he has beautifully remarked, उड़ने दोगे तो 7 आसमानों की खबर लाऊंगा, उड़ा दोगे तो छत पे ही बैठ जाऊंगा। जो शेर का पहला स्टेंजा है वो कुछ इस तरीके से है, उड़ने दोगे तो 7 आसमानों की खबर लाऊंगा, यानी कि अगर मुझे अपने पोटेंशियल के हिसाब से चलने दोगे, काम करने दोगे, अपने विल्स एंड विशेस के हिसाब से काम करने दोगे, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से काम करने दोगे, तो आई विल डेफिनेटली डिस्कवर द नॉलेज, आई विल डेफिनेटली डेवलप एंड क्रिएट द नॉलेज। डियर स्टूडेंट, सेकंड वर्स डिस्क्राइब्स, उड़ा दोगे तो छत पे ही बैठ जाऊंगा, अगर आप मुझे अपने तरीके से चलाओगे। डियर स्टूडेंट्स, इट मीन्स जो पहली वर्स है, उड़ने दोगे तो 7 आसमानों की खबर लाऊंगा, लर्नर इज एक्टिव देयर, उड़ा दोगे तो छत पे ही बैठ जाऊंगा, तो हियर द लर्नर इज पैसिव। जब लर्नर पैसिव होगा, द क्रिएशन ऑफ द नॉलेज इज नॉट पॉसिबल, डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज इज नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई constructivism believes learning is the active phenomena. It means there must and ought to be the active involvement of every
learner. जब तक कि एक learner active participation नहीं करेगा तब तक creation of knowledge का possible नहीं है. We cannot create and develop the knowledge. In order to develop the knowledge, learner should actively participate in the learning. Dear students, the constructivism as a discourse of knowledge, it was against the banking system of education. Number of times we have given the detailed account of banking system of education. What was banking system of education? Banking system of education is that education system in which heavy doses of knowledge are ejected in the brain of the child. और जो बच्चा होता है बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन में वो पैसिव होता है और टीचर जो है वो ठूस ठूस के बच्चे के दिमाग में यानी कि चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन लोड करता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग. बच्चे में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती है बल्कि बच्चा जो है वो इंफॉर्मेशन को रॉट फॉर्म में रिटेन करता है या मेमोराइज करता है. So constructivism as a discourse of knowledge, it has highly rejected the banking system of education. क्योंकि बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन में टीचर एक्टिव भी होता है और डिक्टेटर भी होता है और जो लर्नर है वो पैसिव बन जाता है. जब पैसिव लर्नर बन जाएगा तो नॉलेज एक्सप्लोरेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्रिएशन एंड डिस्कवरी ऑफ नॉलेज की पॉसिबिलिटी नहीं है. दैट इज वाई नटशल में हम कह सकते हैं लर्नर्स आर एक्टिव रादर देन द पैसिव. वी शुड ऑलवेज ट्रीट द लर्नर्स एक्टिव रादर देन द पैसिव. जहाँ तक कि टीचिंग लर्निंग की बात है या होल एजुकेशन सिनेरियो की बात है तो एजुकेशन सिस्टम में हमें लर्नर्स को सेंटर बनाना चाहिए रादर देन वी विल ट्रीट देम पैसिव एजेंट्स. जब तक कि हम बच्चे को पैसिव समझेंगे सो इट मीन्स दैट वी विल कंप्लीटली वॉश आउट द हैंड्स फ्रॉम द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. कोई भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है. सो इन मॉडर्न टाइम्स आवर एजुकेशन सिस्टम highly emphasizes that curriculum designing should be based on constructivistic approach. Number third, social interactions are important. The development and formation of abilities like memory, learning, problem solving, and attention take place through the influence of culture. It means cognitive functions are facilitated by social interactions, due to which learners need to engage in different social activities. Dear students, social constructivism may be defined. Knowledge is created and developed with the result of experiences, and those experiences which we receive from the cultural and social environment. सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस के बगैर ना तो लर्निंग पॉसिबल है ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट. Vygotsky social constructivism believes that cognitive development is influenced by the cultural development. जितनी की कल्चरल एडवांसमेंट होगी उतनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होती है. जैसे कि हम मॉडर्न वर्ल्ड में भी देखते हैं जो हाईली प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ है वहाँ पर प्रोग्रेसिव ब्रेन्स भी निकलते हैं. एक्चुअली स्पेशलिटी डज नॉट लाइज इन देयर ब्रेन्स. उनके ब्रेन सुपीरियर नहीं है बल्कि उनका कल्चर सुपीरियर है. वहाँ पर कल्चरल एडवांसमेंट ज़्यादा है और विगोस्की का मानना है जितनी की कल्चरल एडवांसमेंट होगी जितनी की सोशल डेवलपमेंट होगी उतनी लर्निंग भी इफेक्टिव होगी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इफेक्टिव होगी. इट मीन्स आवर थॉट्स एंड आइडियाज आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइप ऑफ द कल्चर. जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस की वुल्फ चिल्ड्रंस के बारे में. दो वुल्फ चिल्ड्रन जो इन्फेंसी पीरियड में वुल्व्स ने जंगल में लिए और वो दो बच्चे वुल्व्स ने पाले
और जब वो बच्चे इन्फेंसी से लेके एडोलेसेंस स्टेज में चले गए, उन्होंने कंप्लीटली बिहेवियर फॉलो किया था एनिमल्स का, वुलूज का। जिस तरीके से एनिमल्स गोश्त नोचते हैं उसी तरीके से वो भी गोश्त नोचते थे, और वो 2 लिम्ब्स पे नहीं चलते थे, वो एनिमल्स की तरफ 4 लिम्ब्स पे चलते थे, क्योंकि उन्होंने कंप्लीटली एनिमल्स का बिहेवियर अडॉप्ट किया था। कोई भी लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं थी। तो 14-15 साल के बाद साइंटिस्टों ने उन्हें जंगल में पकड़ लिया और सोसाइटी में लाया, आई मीन टू से यू ह्यूमन सोसाइटी में लाया, इन ऑर्डर टू सोशलाइज बोथ द ह्यूमन चाइल्ड। एक 14 साल का था, दूसरा राउंड अबाउट 15 साल का था, लेकिन उनमें सोशलाइजेशन नहीं हो गई। एक बच्चा 6 महीने से पहले उसकी डेथ हो गई और दूसरे की डेथ 1 साल के बाद हो गई, क्योंकि बेसिक लाइफ पीरियड जो था वो उन्होंने जंगल में बिताया था। उनका टोटल बिहेवियर जो था वो एनिमल्स की तरफ था। डियर स्टूडेंट्स, उन 2 ह्यूमन बच्चों में उतनी ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट थी जितनी कि एनिमल्स की होती है। So dear students, we can say that our cognitive development, our thought process, it is directly proportional to the cultural and social influence. जितनी की cultural advancement होगी, जितनी की social development होगी, उतनी हमारी cognitive development भी होती है। That is why it is rightly quoted by John Locke. Child's mind is like a tabula rasa. एक बच्चे का जो माइंड है वो क्लीन स्लेट की तरफ है, कोरे कागज की तरफ है। When the child comes contact with social and physical environment, environment writes the message onto the brain of the child. यानी कि growth and development of the child takes place. It is because of natural environment. It is because of social and cultural influence. So nutshell में, dear students, we can say that social interactions plays very important role in terms of both learning and growth and development of the mind. Number 4th, learning by discovery. Discovery learning is an inquiry-based learning method that takes a constructivistic approach to education, where students are encouraged to construct their own knowledge through a self-directed learning process. जैसे कि हम सब जानते हैं, keeping in view the discovery approach. In discovery approach, we investigate or search the knowledge. Knowledge can be developed with the help of investigation. Constructivism believes that learning is based on the discovery approach. We have to find out the knowledge, क्योंकि हम knowledge को find out के बगैर नहीं develop कर सकते हैं। Knowledge को हम discovery के बगैर नहीं develop कर सकते हैं। Discovery is the way by which we can promote the knowledge, by which we can create and construct the knowledge. Dear students, जो भी वर्ल्ड की इन्वेंशंस है या डिस्कवरीज है, all these inventions and discoveries are based on the principle of observation or based on the principle of investigation. I mean to say you, the inventions and discoveries are based on discovery approach of learning. So due importance should be given to the discovery approach of learning in the field of teaching and learning. अगर हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाना है या होल एजुकेशन सिस्टम को साउंड एंड बेटर बनाना है, सो प्राइमरी इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू द डिस्कवरी अप्रोच, विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एंड बाय एंड लार्ज वी कैन से दैट इन्वेस्टिगेशन. Dear students, as we know that the penicillin is the medicine or antibiotic, it is discovered by one of the eminent scientists, namely Alexander Fleming. जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता था तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचना ह्यूमन बींग्स को मुश्किल होता था, यानी कि रूथलेसली
ह्यूमन पॉपुलेशन की डेथ हो जाती थी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, और उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को तोड़ करने के लिए जो एमिनेंट साइंटिस्ट था, नेमली अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, Alexander Fleming has discovered the penicillin on the basis of discovery approach. Now, apart from it, we will see number of inventions and discoveries. जैसे कि हमने previous lecture में भी रिकॉर्ड किया है किस तरीके से लुईस पास्चर ने रेबीज इंजेक्शन या रेबीज मेडिसिन दरियाफ्त किया, क्योंकि जब पागल कुत्ता पहले किसी को काटता था तो उसे लोहार के पास लिया जाता था, बिकॉज एट दैट टाइम देयर वाज ओनली वन अल्टरनेटिव और ट्रीटमेंट, दैट वाज कॉटराइजेशन मेथड। लोहार गर्म लोहे से जख्म को जलाता था। पेशेंट जो थे वो देख के ही घबराते थे और कभी कभार उनकी डेथ भी हो जाती थी स्ट्रेस या एंजाइटी से। हाई लेवल ऑफ एंजाइटी उनमें हो जाती थी तो हार्ट अटैक के शिकार वो हो जाते थे। तो जब ये मंजर लुईस पास्चर ने देखा कि कितना पेनफुल ये ट्रीटमेंट है, इसकी ताप एक पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाता है ड्यू टू साइकोलॉजिकल रीजंस, वो साइकोलॉजिकली विक्टिम बनता था, उससे भी डेथ हो जाती थी, या कॉटराइजेशन के बाद भी इन्फेक्शन खत्म नहीं हो जाता था, क्योंकि रेबीज डॉग के जो जर्म्स होते थे वो पेशेंट के बॉडी में अंदर चले जाते थे, जिसकी वजह से कपल ऑफ डेज में उसकी भी डेथ हो जाती थी। तो ऑन द बेस ऑफ डिस्कवरी अप्रोच उसने ऑब्जर्वेशन की मैड डॉग की, एक्सपेरिमेंटेशन की मैड डॉग की, विद द सपोर्ट ऑफ असिस्टेंट। उसका असिस्टेंट था, वो मिलजुल के मैड डॉग्स को पकड़ते थे और उन्हें इन्वेस्टिगेट करते थे। एंड फाइनली दे फाउंड द ट्रीटमेंट, उन्होंने फाइंड आउट किया ट्रीटमेंट। देयर स्टूडेंट्स, पहले रेबीज विक्टिम को 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे, लेकिन साइंस ने इतनी तरक्की की है आज एक ही लगाना पड़ता है। नाउ नटशल में हम कह सकते हैं लर्निंग बाय डिस्कवरी। अगर हमें लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है, प्रोग्रेसिव बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है, सो वी हैव टू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द डिस्कवरी अप्रोच ऑफ learning. Discovery approach of learning is based on observations, experimentations. By and large, we can say that search and investigation. Number 5th, focus on knowledge improvement. Vygotsky's cognitive development theory enables learners to gain skills such as problem solving, inquiry, and critical thinking for the improvement and creation of the knowledge. Dear students, keeping in view the constructivism believes on knowledge improvement. किस तरीके से हम नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं? जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, नॉलेज इज क्रिएटेड एंड डेवलप्ड विद द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, विद द रिजल्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट। जब एक इंडिविजुअल नेचुरल और सोशल एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करेगा, ऑटोमेटिकली क्रिएशन ऑफ नॉलेज विल टेक प्लेस। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे, देयर आर सो मेनी ट्राइबल एरियाज, बहुत से ऐसे ट्राइबल एरियाज है जहाँ पर रोड फैसिलिटीज नहीं है, हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट ने नहीं बनाए हैं, उनके पास शिक्षा का कोई जरिया नहीं है, यानी कि एजुकेशन नील एट द बॉटम है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जिंदा ही नहीं रहते हैं बल्कि अच्छी तरीके से अपनी लाइफ जो है वो बसर करते हैं। हाउ कम इट इज पॉसिबल? डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने खुद क्रिएशन ऑफ नॉलेज किया है बाय एक्सप्लोरिंग देयर नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट। वो जंगलों में रहते भी नेचुरल और सोशल एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं, और एक्सप्लोरेशन की बदौलत से उन्होंने मेडिसिन भी डेवलप किए हैं, फूड भी डेवलप किए हैं, एग्रीकल्चर भी डेवलप किया है, टेक्नोलॉजी भी डेवलप की है। इसीलिए एक टीम ऑफ साइंटिस्ट ने जब उनका ट्रीटमेंट देखा तो 100% रेलिवेंस उनके ट्रीटमेंट में उन्हें लगी, ये सही तरीके से इस डिजीज को ट्रीट करते हैं।
अदरवाइज वो किसी स्कूल में नहीं गए, उन्होंने कोई एजुकेशन हासिल नहीं की है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट उनमें वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, जब उन्हें कोई बीमार पड़ता है तो वो खुद देसी इलाज करते हैं, तो वो खुद ट्रीटमेंट पर्टिकुलर डिजीज को देते हैं, और उनमें ऐसी नॉलेज है, उन्हें पता है कि किस प्लांट का मेडिसिन वैल्यू क्या है, किस प्लांट से हम कौन सी मेडिसिन बना सकते हैं, किस जड़ी बूटी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। बिना स्कूलिंग के, बिना एजुकेशन हासिल या कक्षा हासिल करने के बगैर भी उनमें इतनी नॉलेज है। Dear students, that is why constructivism believes that we explore the natural environment and social environment in order to develop and create the knowledge. Number 6, focus on cooperative and collaborative learning. A collaborative or cooperative learning approach involves students working together in order to ensure that everyone participates. As we know that collaborative and cooperative learning is the hardcore concept of social constructivism, keeping in view the Vygotsky's social constructivism. Social constructivism of Vygotsky is purely based on the collaborative form of learning, यानी कि एक सिंगल टास्क ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को दिया जाता है। द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स unanimously or jointly performs the task. Dear students, there is the famous quote that union is the strength. इत्तेफाक में ताकत होता है। अगर हम बच्चों को मिलजुल के एक कॉमन टास्क देंगे, आई मीन टू से 5-6 बच्चों को एक कॉमन टास्क देंगे, उससे सिर्फ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ही नहीं हो जाएगी, बल्कि लर्निंग जो है वो इफेक्टिव और प्रोडक्टिव भी बन जाएगी। आसानी के साथ हर कोई बच्चा जो है वो लर्न कर पाएगा, लेकिन कंडीशन इज देयर मस्ट एंड ऑट टू बी द पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल। इसीलिए स्कूल लेवल पे, आई मीन टू से इन एजुकेशन सिस्टम, हमें मिनी प्रोजेक्ट से लेके मेगा प्रोजेक्ट्स तक बच्चों को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करना चाहिए। 5-5, 6-6 स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट देना चाहिए। जब वो मिलजुल के उन प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, ऑटोमेटिकली एक तो हमारा गोल भी अचीव हो जाएगा, कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। सेकंड, लर्निंग जो है वो भी इफेक्टिव बन जाएगी, रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाएगी। लाइक दैट प्रोजेक्ट्स एट स्कूल लेवल शुड बी रिलेटेड टू द सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, या कोई और प्रोजेक्ट हम बच्चों को दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द पैडी कल्टीवेशन, 5-6 लर्नर्स को हम पैडी कल्टीवेशन का प्रोजेक्ट देंगे और किस तरीके से वो फील्ड वर्क करेंगे रूरल एरियाज़ में, ताकि उन्हें कंप्लीट इंफॉर्मेशन गैदर हो जाएगी राइस कल्टीवेशन। Number 7, reciprocal teaching. Dear students, reciprocal teaching is that teaching in which both students and teachers teach together. यानी कि टीचर्स और स्टूडेंट्स में एक डायलॉग होता है, एक इंटरेक्शन होती है। टीचर्स बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचर्स। एक दूसरे के बिहेवियर से, एक दूसरे के पेडागोजिकल टेक्निक से, इंस्ट्रक्शन से वो असरअंदाज होते हैं और लर्निंग जो है वो ऑटोमेटिकली इफेक्टिव बन जाती है। दैट इज वाई इट इज नोन एज रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल मीन्स where the teacher gets influenced by the students and students too gets influenced by the teacher. So this type of teaching is known as reciprocal teaching. In next lecture our content will be the same, reciprocal teaching. क्योंकि मैंने इन सेशन में कहा है reciprocal teaching जो है it is important कीपिंग इन व्यू द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। नेट के एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से देखो या सीटेट के एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से देखो, और अपार्ट फ्रॉम दीज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पोस्ट ग्रेजुएशन के या अंडर ग्रेजुएशन के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी
ये क्वेश्चंस अक्सर बेशतर पूछे जाते हैं. So this was all about today's lecture. If you really enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.